जो ऑक्सीजन का मामला है, ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत में कमी आई। मैं 7 तारीख को जितने भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, तो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई थी। उसी दिन हमने 8 जो ऑक्सीजन प्लांट है जो औद्योगिक उत्पादन कर रहे थे, उसे मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के हमने लाइसेंस दिया और आज छत्तीसगढ़ में 27 यूनिट है जो ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं, 2 लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ प्रतिदिन उत्पादन होने वाले ऑक्सीजन है 388.88 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 160 मीट्रिक टन खपत हो रही, बचत दूसरे राज्यों में जा रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। Chhattisgarh has emerged as a lifeline for many in states such as Madhya Pradesh, Telangana, Maharashtra and Gujarat, rolling out tankers containing the much sought after medical oxygen, which it has been producing in surplus over the past few months. This apart, the state has also been responding to emergencies. On Sunday, it sent out a tanker carrying 16 metric tons liquid oxygen to a hospital in Lucknow. After receiving information on phone from Priyanka Gandhi, a tanker of oxygen supply to Medanta Hospital in Lucknow has been immediately arranged for the treatment of COVID-19 patients, tweeted Chief Minister Bhupesh Baghel. Chief Minister Baghel says Chhattisgarh has no oxygen shortage as the state has been managing its resources well. It's not that Chhattisgarh does not have needs. Its liquid oxygen consumption grew from 3 metric tons per day in March 2021 to 170 metric tons per day by April 20th this year. Officials say that apart from ensuring the daily supply of oxygen, an extra amount of the life-saving gas is being stored for daily usage in case the demands grow. Currently, the state is producing 388 metric tons oxygen per day against its need of 170 metric tons. Although the Bhilai steel plant, which produced more than 13,000 metric tons liquid oxygen from August 2020 to March 2021, remains the biggest supplier, setting up of similar plants in the district since November last year has turned out to be the game changer during the second surge. ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए और उसका अनुमान लगाते हुए दूसरा लहर आए, इसके पहले ही सितंबर महीने में हमने अपने स्वास्थ्य के सेवा के प्रतिष्ठानों में ऑक्सीजन जनरेटिंग यूनिट्स स्थापित करने का निर्णय लिया और नवंबर से ये काम चालू हो गया था। करीब 25.79 मिलियन लीटर, करीब 3,685 जंबो सिलेंडर के बराबर प्रतिदिन के हमने ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी राज्य में निर्मित की। और ये कोविड की ये दूसरी लहर आने के काफी पहले, जब इसकी बात प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि हमने तो जंग जीत ली और कोविड चला गया पीछे। Since November last year, 16 plants have been set up in 13 districts by the state government and 1 plant has been set up by the union government. Work is in progress on 7 more plants, 4 funded by the state and 3 by the centre. Located either at the district hospital or the medical college, the 16 oxygen plants produce between 88 and 305 jumbo cylinders of oxygen a day. According to state officials, one of the biggest benefits of the localized oxygen plants is that the hassle of transporting and storing liquid oxygen from Bhilai could be curbed, especially in districts such as Korba or